out of the gypsy, and the policemen were watching in silence when the father was killed and the brother was killed and these two women were stripped. Focusing on her. The state police, the National Women's Commission and the State Women's Commission were all silently watching. Maybe they were wishing that this will miraculously vanish till the videos unfortunately went viral. And after many weeks and months, 5 or 6 people out of the mob were arrested. But time and again these women were asking why no action was taken against these policemen who handed them over to the violent mob. But till yesterday, the government chose to keep silent and it did not respond. The people have been mentioning Draupadi in this house. नहीं, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। प्रवक्ता का चेहरा दिखाते हैं। नहीं, आप जब भी इंडिया लाए आप अपनी बात रखिए। तो कैमरा यहाँ पे नहीं, कैमरा आप पे आता है। ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप करीम उसी जी, आप अपनी बात रखिए। The other thing will not go into the record. Only Karim Moses's speech will be going in record. Sir, the people have been mentioning Draupadi from Mahabharata in this house and how she was humiliated and stripped. So these women also must have prayed to some god to come and help them. God nor the government came to help these two women. And anybody who has read the Mahabharata properly knows that it is not the perpetrators of the crime who were punished, but the silent spectators who stood there like trees watching her being humiliated were also punished. They will be punished like they will be punished when they were silent in Hathras, Kathua, Unnao, Bilkis Banu, and when the wrestlers were protesting. The country, the nation, India, the mothers of India will punish them. So there are hundreds of relief camps. There are hundreds of relief camps, but there is no food, no water. It is overcrowded with no proper sanitation. The roofs are leaking and children have to live there. They cry out of fear and hunger. Is this what you call relief camps in this country? You don't even want to reach out to people who've lost everything, who had to walk for days to save their lives. You can't give them food, you can't give them protection, you can't ensure that the roofs don't leak. At Bishnupur, a woman said that people are saying my son has been killed, but I haven't seen his body. I refuse to believe that he has been killed. His best friend has told her that the son was killed, but she refuses to believe that he was killed because she lives in hope. She says, I hope that someday he'll come back alive to me. This is not just one mother who's saying this. There are brothers, fathers, families who wait, hoping that their loved ones are alive somewhere. Even if they're injured, they are there somewhere. A Methi girl in one of the camps asked me, you have come to see us, but why hasn't the Chief Minister or the Prime Minister bothered to come and visit us? We have lost our homes, families, livelihood. I will never go back to my home. I will never feel safe there. The government has let me down. Why hasn't anybody come here to wipe my tears? But instead of listening to her pain and comforting her, the BJP fake news team manufactures a narrative saying that she told the India team that I have faith in the Prime Minister. Why have you come here? Sir, the truth is, whether it is the Kukis, Nagas or Methi,
We only saw despair and despondency in their eyes. I request the Prime Minister, this government, to reach out to these people and say that we care and justice will be done. Can't you do that much for people who've been hurt, who are bleeding? Sir, we went there to say India stands with you. We would like to know whether the government stands with them. Yes, yes, yes. The Chief Minister of Manipur has been blaming the Kukis and the Naga people for the drugs there and the drug cultivation. But a former SP, Ms. Brinda, blames the Chief Minister, the Chief Minister's office, and the Manipur government for it. Shame. There have been many stories in the newspapers earlier that the pesticides and fertilizers which are being sent to the state are diverted for poppy cultivation and not for food production. Shame. Shouldn't we find out the truth? Should not there be a proper inquiry into what has been really happening? You brought the Sengol to the new parliament with big pomp and show. You said it is a Chola tradition. You don't know Tamil Nadu history properly. Have you heard about the Pandian Sengol? The Pandian Sengol which burnt, which shattered when the King failed the common people. Do you know the story of Kannagi? Please stop imposing Hindi on us and go read the Silappadigaram. It has a lot of lessons to teach you all. Sir, it's okay. They're very scared of us. They don't want to see our faces also. We are happy with it as long as they can hear us. They cannot hear Manipur people, at least let them hear us. So this government is very lucky because it knows to manufacture one issue after another, one disaster after another. So we have to forget what happened a month ago and discuss something else, a new issue in Parliament today. Because we've not had the opportunity to discuss what happened in Balasore in Odisha. 3 trains collided and 288 passengers died and over 1,000 were injured. And there are bodies still lying in Ames, Bhubaneswar, which are unclaimed and not identified. But the report on the accident says lapses at various levels in signal and telecommunication department is responsible for the accident. And they've been warned, the government has been warned 2 months before the accident that there should be an inquiry and the methods of shortcut being used for signal and telecommunication system in the country has to be looked into. Today, there are vacancy, operational safety categories. Vacancy is over 50,000 people have not been employed. Isn't this the fault of the government? What is your response to the accident? What is your response to the number of people who've lost their lives? This government fears deploys accountability. It hides data or refuses to collect data. When data does not favor them, they sack the person in charge. The NFHS chairperson was suspended when he exposed the false claims of the union government. The minister, when she was speaking, said that it is, the minister Smriti Irani said India is 100% open defecation free. There is not one single state which is 100% open defecation free. It is a total lie. And when the person concerned made sure that the truth comes to light, he was suspended. Sir, the employment data was withheld till the election results were out. And 2 people in the department, in the commission, resigned because of that. The unemployment rate is 8.5% in this country. Investments have dropped to half. It was 10.5%, it is 5% now. People are going back. More than 50% people are there in the agriculture sector. This doesn't happen in any developing nation.
People are going back to agriculture because they have no hope, there is no space for them in formal employment. Who's speaking? We can't make out. Speakers, now we can see. And the national policy for rationalization of schools has closed down thousands and thousands of schools, and millions of children have lost their opportunity to go back to school. Just wait. So why is it being changed? आप बैठ जाइए। House is being controlled. This Sansad TV is being controlled from somewhere else. कनिमोजी जी, आप बैठ जाइए। What is there? दानिश अली जी अपने जगह पे जाइए। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों नहीं दिखा रहा? Sir, whenever we speak somebody from the opposition, the camera is So why, sir? It is looking somewhere else. This is so silly, sir. Sir, when Smriti Irani was speaking, it was there. When Smriti Irani was showing the play card, the camera was on the play card. When Rahul Gandhi श्रीमती कनिमोजी जी, आप अपनी बात रखिए। please don't show play card. We have taken note of it. Please restore the democracy in this country. We have taken note of it. आप बैठ जाइए। People are watching. कनिमोजी जी, आप बोलना चाहती हो? People are कनिमोजी watching. जी, आप आगे बोलिए। People are watching. आप शुरू कीजिए। Sir, you have to give me extra time. Sir, are you closing down schools because only the OBCs, SC, ST students go to these government schools? In a reply to the Rajya Sabha, the Union Minister of State has stated that 25,593 students belonging to the SC, ST, OBC communities have dropped out of central universities. Is this the India you're talking about? Is this the Bharat you proudly talk about, where students from suppressed communities cannot go to national institutions, central government institutions and study there because of discrimination? This government, we've been time and again threatened in this house with ED, we're going to jail. It is not only the opposition parties and the media which is being threatened by this government. The government creates a framework that exposes its own people to conditions of unfreedom and subject them to state brutality. Between 2014 to 2020, Kindly conclude, madam. Kindly conclude. 7,000 people have been charged with sedition charges, and most of them, 7,000 people, and most of them are below the ages of 30. Isn't this a shame? And sir, the Prime Minister calls differently able people as Divyangs, but the pension which you give them per month is rupees 300, which is equal to 1 kilo of tomato in your government. Sir, it is not only the prices which rise in this government, it is crimes against women, which has risen to 26.3% in the past few years in the BJP government. Sir, this is a government which is indifferent, and its administration is indifferent to people, and they don't value people, or do they care about the well-being of the Indian citizens? But the irony is that you call yourself nationalists and call us anti-national. Are you nationalists? Do you care about this country? Do you care about people in Manipur, the women, the children there who suffer every day? Until today, you haven't been able to bring peace. Thank you. To Thank you that very much. state. Kindly Sir, conclude. You are hurting Your Mother time is India. over. You are hurting Mother India, making her bleed every day.
India will teach you a lesson very soon. Thank you. Thank you. Sri Namo Nageshwar Rao ji. Hello, Namo Nageshwar ji. You tell me which rule, under which rule you are raising? नहीं, ऐसा कोई रूल में नहीं है. नमो नागेश्वर जी, you started. पार्टी का मेंबर बोलता है तो कैमरा उसके ऊपर होता है, लेकिन जब ऑपोजिशन का बोलता है तो कैमरा जो है चेयर पे होता है. सर, who is controlling this लोकसभा टीवी? नमो नागेश्वर जी, आप अपनी बात रखिए. Thank you, Chairman, for giving this opportunity to speak on motion of no confidence on behalf of BRS party, my leader KCR Garu. सब अभी स्वतंत्र होके इंडिपेंडेंस होके अभी 75 इयर्स में हम लोग आ गए. 75 साल से अगर हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूंसी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का दिक्कत सब अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी वाला बताता है, मगर जो देश का जब बात आता है तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 1 में जो लिखा है उसको इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. मगर 75 साल होने का बाद भी आज के दिन में इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स है और छोटा स्टेट से बड़ा स्टेट है. कुछ स्टेट जो है ना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ स्टेट जो है ना आपके लिए अपोज है. मगर आपको जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठने का बाद आप यहां से सबको इक्वली जो है ना देखना चाहिए, सही ढंग से देखना चाहिए. वो छोटा स्टेट हो बड़ा स्टेट हो, आपको मदद कर रहा हो, आपको अपोजिशन हो, मगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा ध्यान जो है ना पूरा देश के ऊपर होना चाहिए. जब स्टेट्स का जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखना चाहिए. अभी देश में क्या हो रहा है, अभी जो स्टेट में स्पेशली हमारा जो स्टेट में अगर तेलंगाना में हम तो जरूर जो है ना मणिपुर का बात करेगा. अभी तेलंगाना में पिछले 9 साल से जो है ना हमारा केसीआर साहब जो है ना मुख्यमंत्री है, हमारा पार्टी जो है ना उधर गवर्नमेंट चला रहा है स्टेट में. सेंट्रल में आप लोग भी जो है ना 9 साल हो गए, 9 ईयर से आप लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट में इधर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में है. मगर हमारा स्टेट को इतना अन्याय कर रहा है. जो एपी आर नेशन एक्ट में 2014 में ये हाउस से जो एक्ट पास हुआ था, वो एक्ट का अनुसार हमको जो है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी खम्मम से उधर जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने का था. हमारा काजीपेट में कोच फैक्ट्री लगाने का था. कोच फैक्ट्री का जगह ये कोच फैक्ट्री लेके गया महाराष्ट्र, ये कोच फैक्ट्री लेके गया गुजरात. हमको जो है ना कोच फैक्ट्री नहीं दिया, वैगन रिपेयर का जो है ना वैगन शेड एक बना दिया. उसी तरह से आईआईएम देने का था, हमको नहीं दिया. ट्राइबल यूनिवर्सिटी देने का वादा था एक्ट में, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है. मेडिकल कॉलेजेस पूरा देश में जो है ना सबको दे दिया, तेलंगाना को एक भी जो है ना मेडिकल कॉलेज नहीं दिया. कल हमारा दोस्त पुराना दोस्त हमारा लोकसभा टीवी को तो छोड़ो ना, हमारा दोस्त निशिकांत दुबे साहब ने बोल रहा था उसका जो है ना कॉन्स्टिट्यूंसी में एम्स लगा हुआ है और उधर जो है ना मेडिकल कॉलेजेस लगा हुआ है. मगर तेलंगाना में क्यों इस तरह से कर रहा है? तेलंगाना का लोग, तेलंगाना देश में है, तेलंगाना भी पार्ट ऑफ इंडिया है, मगर तेलंगाना का ऊपर आप लोग क्यों इस तरह से कर रहा है? और एक भी जो है ना मेडिकल कॉलेज नहीं दिया है. सबसे ज्यादा नवोदय विद्यालय याज पर द एक्ट का अनुसार हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में Why you are disturbing him? Why frequently you are standing up? Take your seat. Take your seat. I don't want to show the opposition. Why you are disturbing him? Because the chair is not taking it. आप बोलिए. सब अभी when any member Don't disturb him. expressing their pain, Don't disturb him. their grievances of the state, it's a, the TV is diverting somewhere. तो आप बोलो इनकी Is it a जगह. justice?
That He is is not focusing on the opposition members at all. अभी गलत कर रहे हैं। अभी चेयरमैन साहब, हम लोग नवोदय विद्यालय हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक्ट के अनुसार एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक नवोदय विद्यालय देना है। पिछले 9 साल से एक भी जो है ना विद्यालय में नहीं दिया है। हमारा मुख्यमंत्री साहब चिट्ठी लिखा है, हम लोग भी चिट्ठी लिखा है, ये हाउस में कई दफा बात किया है, तब भी जो है ना एक स्कूल भी नहीं दिया है, एक नवोदय विद्यालय भी नहीं दिया है। उसी तरीके से अगर आप बोलने से हम लोग को पहले कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, आईटीआर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तेलंगाना को सैंक्शन हुआ था। आप लोग जो है ना जो सैंक्शन हुआ प्रोजेक्ट को निकाल दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है। क्यों हम लोग का तरफ से इस तरह से कर रहा है, ये जो है ना बोलना पड़ेगा, बात बोलो को जरूर जो है ना उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। मगर हमारा तेलंगाना का कुछ स्कीम्स तो आप कॉपी कर रहे हैं, अच्छा है। अगर तेलंगाना का इंडिया में सबसे पहले हर एक फार्मर के लिए, अगर एक किसान के लिए हर एक एकड़ के लिए 10,000 रुपए प्रति साल देता है। अगर उसको आप लोग कॉपी किया है, अच्छा है। किसान सम्मान निधि बोल के 6,000 रुपए दिया है, उसको हम लोग स्वागत करता है। कम से कम आप लोग तेलंगाना रूट को आप लोग जो है ना फॉलो किया है। उसी तरह से हम लोग का मिशन काकतिया हर एक घर में जो है ना हम लोग फिल्टर वाटर देता है। और ये भी जो हम तेलंगाना का किसान का बेटा है, विलेजेस में जो है पैदा हुआ आदमी है। हम बचपन में देख रहे हैं, तेलंगाना आने तक हमको पीने का पानी नहीं था, सिंचाई के लिए पानी नहीं था। जब गर्मी आता है तो मार्च से लेकर जुलाई तक जो है ना पीने का पानी नहीं, तो कुछ गांव जो है ना पानी के पास जाना पड़ता था। ये कंडीशन था तेलंगाना का। मगर हमारा नेता केसीआर साहब आने के बाद पूरा तेलंगाना में हर घर का जो है ना फिल्टर पानी दे दिया। उसको भी जो है ना आप लोग हमारा मिशन भगीरथ को कॉपी किया है, अच्छा है। आप लोग भी देश में हर घर का जो है पानी दे रहा है, हर घर जल का नाम से दे रहा है, वो दे दीजिए। अगर इसी पार्लियामेंट में हम लोग क्या क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था, देश में कौन सा स्टेट है बड़ा स्टेट में हर घर का जल जो है ना दे रहा है। इसी आंसर जो है ना मंत्री साहब ने दिया है। इसमें तो एक ही स्टेट है जो बड़ा स्टेट में तेलंगाना है, पूरा हर घर में जो है ना जल दे रहा बोल के। हम लोग जो है ना ये करने का बाद पूरा देश में सब स्टेट्स के लिए आप लोग पैसा देता है, मगर हम हर घर जल जैसा मिशन काकतिया बनाया है। मिशन काकतिया का बाद हमारा जो है ना हम लोग का जो है नीति आयोग का रिकमेंडेशन वो Sir, there is no point of order allowed yesterday also. Only point of orders cannot be allowed to the treasury benches. How it can be? We also asked for the point of order, sir. Every time point of order is being given to Nishikant Dubey. How can it be? स्पीकर्स डायरेक्शन 115 वो ये कहता है सर कि कोई मेंबर यदि गलत बयानी कर रहे हैं तो मंत्री नहीं कोई मेंबर भी उसका सुधार कर सकते हैं। ये जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं सर, उस पे 86,000 करोड़ मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में ठीक है कालेश्वरम प्रोजेक्ट में भारत सरकार ने 86,000 करोड़ रुपया दिया है। ये गलत बयानी कर रहे हैं। नमो नागेश्वर जी, आप बात रखिए। आप कितना वाई यू आर सो मच एजिटेटेड? अरे भैया इनको बोलने दो, आप कितने एजिटेटेड होते हो? आप बोलिए। मिशन का कतिया मिशन साहब आप अपनी बात रखो। चेयरमैन साहब, मिशन भगीरथ के लिए नीति आयोग ने रिकमेंड करके 24,000 रुपीज को रिकमेंड करके आपका पास भेजा इसको पैसा देने के लिए। 1 रुपए नहीं दिया है, 1 रुपए नहीं दिया है। अगर पूरा देश में हर एक राष्ट्र को हर घर जल का पैसा देता है, हमारा जो है ना तेलंगाना में हम लोग जो है ना वो स्कीम, अगर हमारा जो है ना हर घर में जो है पानी देने का बाद तेलंगाना को 1 रुपए भी नहीं दिया है। उसी तरीके से आज के दिन में देश में 24 आवर्स पावर किसान लोगों को फ्री देने का राष्ट्र एक ही राष्ट्र है, वो तेलंगाना है। राज्य हमारा स्टेट जो है ना, स्टेट में 24 आवर्स फ्री करंट देता है, और वो भी जो है ना आप लोग स्कीम लगा दीजिए पूरा देश में।
अगर तेलंगाना में पावर नहीं जाएगा, अमेरिका में पावर कट हो सकता है, मगर तेलंगाना में कभी एक दिन के लिए भी पावर नहीं जाता है। जब हम लोग का तेलंगाना नहीं आया था, उस टाइम में अंधकार में था तेलंगाना बनने के बाद हम लोग जो है अभी 18,600 मेगावाट का पावर प्लांट्स लगा दिया। उसका वजह से हम लोग आज के दिन में पूरा पैडी में देखे तो अभी पंजाब को क्रॉस करके नाउ वी आर नंबर 1 है। उस तरह से पूरा जो है ना जमीन का रेट भी जब तेलंगाना आने के बाद 2 लाख रुपए पर एकड़ था, अभी जो है ना 30 लाख रुपए हुआ है। उसीलिए हम लोग ये मांगता है, आप जो है जो जिस तरीके से जो पेंडिंग इश्यूज को सबको हमको सपोर्ट करे। अगर उसी तरह से देखें तो आपका जो है फेल्यूर्स भी बहुत है। आप कितना वादा किया था, अगर लोगों को जो है ना बहुत वादा किया है आप। अभी हमारा पर कैपिटा इनकम इंडिया में हम लोग नंबर 1 है। जब तेलंगाना आने का पहले हम लोग 10-12 में था रैंक में, अभी तेलंगाना आने के बाद वी आर पर कैपिटा में नंबर 1 है। 3,12,390 यस नंबर 1 है। बड़ा स्टेट में वी आर नंबर 1 है। और उसी तरीके से अगर आपका सपोर्ट नहीं है तब भी हम लोग नंबर 1 है। आप लोगों को हम ये बोलना चाहते हैं, आप लोग इसी तरह से सबको सपोर्ट कर दीजिए। अगर उसी तरह से अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना बहुत एरियाज में फेल हो गया। अगर उसको जो है ना प्राइसेस काफी जो है ना, अगर पेट्रोल का डीजल का प्राइस काफी बढ़ गया, उसी तरह से गैस सिलेंडर का प्राइस काफी बढ़ गया, उसी तरह से हर एक साल में 2 करोड़ का जॉब देने के लिए था। अभी 9th ईयर में आप लोग है, 18 करोड़ का जॉब मिलने का था, मगर अभी अनएम्प्लॉयमेंट देश में बहुत है। इसका बारे में भी आप लोग जानना चाहिए। उसी तरीके से सर उसी तरीके से अभी उसी तरह से अभी भी कम से कम तेलंगाना को भी जो ना ठीक ढंग से देखे। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, कभी भी ना कांग्रेस है ना बीजेपी, ना इधर का है ना उधर का है। हम लोग अपना भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का है। हम लोग देश का लोगों का साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक ही मिनट सर, 1-2 मिनट सर अभी सर अभी जिस तरीके से सब जिस तरीके से जो है ना अभी मणिपुर में जिस तरह से हुआ है, ये हम लोग का एंटायर कंट्री में इंडियन पीपुल के लिए ये जो है ना बहुत शर्मिंदगी का है। आप लोग का सिर अभी झुकना पड़ रहा है पूरा विदेश में भी। ये बात हम किस लिए बोल रहा है, अगर यूरोपियन पार्लियामेंट में भी वो लोग एक रेजोल्यूशन जो है ना लगा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब नहीं सब बहुत एक मिनट कंक्लूड कीजिए। अगर मैं स्पीकर का नाम बोलता हूं। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस का फॉर्मर जजेस का कमिटी भी डाला है। अभी आखिरी में चेयरमैन साहब हम एक बात बोलना चाहता है। 15th लोकसभा में ये लोग उधर था, वो लोग इधर था, और इधर अपोजिशन लीडर सुषमा जी था, और फारूक अब्दुल्ला साहब ने बैठा है। उस टाइम में जो ना स्टोन फेल्टिंग हुआ था कश्मीर में, 100 चिल्ड्रन जो है डेथ हुआ है। हम लोग अपोजिशन पूरा डिमांड किया था, सुषमा जी के साथ हम लोग डिमांड करके हम लोग सब गवर्नमेंट को बोला पूरा डेलीगेशन को आप कश्मीर लेके जाइए। ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेके गया था, 39 जो है ना पीपल को ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेके गया था, और उसमें जो ना 3 दिन हम लोग कश्मीर में था, जम्मू में था, सब सेक्शन वाला से बात किया है, हम लोग कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है, कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ है। बहुत उसी तरह से अभी भी मणिपुर के लिए यही काम प्रधानमंत्री जी करे तो अच्छा रहेगा। हम लोग प्रधानमंत्री को इसलिए बात कर रहे हैं, सुब्रयन जी, अब देश का प्रधानी का बात से एक शांति आ जाएगा। देश का प्रधानी का बात अगर सबके लिए जो रेस्पेक्टेबल बात रहेगा, उसी का वजह से हम लोग डिमांड किया है, उसी का वजह से इमीडिएटली उधर जो है ना मणिपुर का बहुत धन्यवाद, शांति लेके आने का जिम्मेदार जो है ये गवर्नमेंट लेना है। थैंक यू चेयरमैन। श्री के सुब्रयन जी। ஸ்பீக்கர் சார், இங்க எனக்கு முன்னர் பேசிய
எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் முன்வைத்த மணிப்பூர் குறித்த பிரச்சனை முழுவதையும் நான் இங்கே வழிமொழிகிறேன். அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்களை என்னுடைய கருத்துக்களாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன்.